हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे कैसे एक व्यू मीटर बना सकते हैं जो कि 4 लेवल इंडिकेट करता है, जैसे कि आहूजा के मशीन में हमें देखने को मिलता है, जिसमें -3 dB, 0 dB, +3 dB, +5 dB का आउटपुट हो। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get. इसका सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाला वायर, ये सभी एलईडी को कॉमन करके एनोड को और सभी कैथोड पे रेजिस्टेंस लगा के आईसी पे कनेक्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे
ये वाला ग्राउंड ब्लैक वाला, और रेड वाला पावर 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। और यहाँ पे ऑडियो इन येलो वाला, और ये पोटेंशियोमीटर इसका लेवल एडजस्ट करने के लिए। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैं 12 वोल्ट अडेप्टर का यूज़ कर रहा हूँ इसको पावर अप करने के लिए। तो मैंने इसको पावर अप कर दिया। उसके बाद इस पर मैं ऑडियो इनपुट कर रहा हूँ मेरे एम्पलीफायर से। तो यहाँ पे ग्राउंड के लिए ये मैंने ग्राउंड को लगा दिया, और ये स्पीकर आउट से भी ले सकते हैं, लाइन आउट से भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्पीकर आउट से देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा गेन ऑडियो इसको चाहिए होता है फुल स्केल में दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 एलईडी यूज़ किया है, आप चाहे तो 10 एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं इस आईसी का। तो चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल में जाके और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम का वीडियो देख सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।